नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेशंस में। सो आई विल बी टेकिंग अप द चैप्टर वाइज जस्ट लाइक आई टुक अप द क्लास 6। आई विल बी कंप्लीटिंग होल ऑफ द ज्योग्राफी फ्रॉम क्लास 6 to 12। और आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो हमें 11th-12th क्लास में नहीं मिलती और वो पेपर में मिलते हैं जी क्वेश्चंस। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव सर्च्ड। सो उन सभी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ इन सेशंस में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना वी विल फील अप्रिशिएटेड एंड वी विल वर्क फ्रॉम आवरसेल्व्स। सो पहला चैप्टर यहाँ पर इन्वायरमेंट का, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट बेसिक्स दिए हुए हैं कि भाई इन्वायरमेंट है क्या चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या। सबसे पहले इधर बताया हुआ कुछ स्टोरी, नथिंग मच इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड देन द लैंड वेयर वी लिव। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? कार फ्यूम्स pollute air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build the factories. So अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें हम हवा, ये हवा, पानी, लैंड और लिविंग थिंग्स को देखते हैं। ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं। और तीसरा ह्यूमन, दैट इज़ ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment. दो प्रकार का होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स काउंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड, प्लांट, लैंड, वाटर, सच थिंग्स। So environment is a combination of natural and human made phenomena. Natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Human environment reveals the activities, creations, and the interactions among human beings. So, land, water, air, plants, and animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and the biosphere. Lithosphere, जो कि crust ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट है, टॉप लेयर, made up of rocks and minerals and covered with by a thin layer of soil. An irregular surface with various forms, landforms such as mountains, plateaus, plains, etc. They are found over the continents and also on the ocean floors. So lithosphere is the domain that provides us forest, environment, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. सो लिथोस्फेयर के बारे में बताया इधर। उसके बाद आपको बताया गया कि हाइड्रोस्फेयर, जिसमें सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर, लेक्स, ये सारे इसमें गिने जाएंगे। फिर एटमॉस्फेयर, दैट इज सराउंडिंग द अर्थ, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ gases, dust and water vapor. Plant and animal kingdom together with biosphere of the living world is a narrow zone of earth where land, water, air interact with each other to support life. So what is ecosystem? NCC camp Ravi's class was attending. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and over the lush green fields, coconut plantations. हीरा फ्रॉम वी गेट नो रेन्स." तो हर एक का अलग अलग सर्कमस्टांसेस थे वहाँ पर। तो इसी प्रकार वाई डू एनिमल्स एंड वेजिटेशन, द वे पीपल लिव, वेरी प्लेस टू प्लेस. So all plants and animals and the human beings depend on the immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. So human environment, human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. So humans learn new ways to use and change environment.
They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution allowed the large scale production, and transportation became faster. तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने इवॉल्व की है विद टाइम, एंड दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर. You ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use the environment in a harmonious manner. A girl from Mizoram, Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing the Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, activities of the people and the places they visit during the holidays. ये था जी बिल्कुल बेसिक चैप्टर था, इसमें तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मिला, बट नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी याद रखिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. डू यू नो वाले चीज़ें तो सारी देखनी है जी. बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम होता था जो. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी याद रखिए, फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked with by transfer of energy and material. So that is all for today for this session. नेक्स्ट सेशन में अगला क्लास सेकंड, क्योंकि इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. जितने भी आपने जो पढ़े हुए हैं हमसे डिस्कस किया, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे क्लाइमेट्स क्लास 7 की बुक में दिए हुए हैं जी. एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. जय हिंद.